Today we have a new problem which name is check if a number is divisible by 8. It's a GFG problem and easy problem. So let's see the problem statement. Given a string representation of a decimal number as check whether if it is divisible by 8 or not. Okay. So let's take an example. Input equals to 16. It is a string form. We have to convert this in integer form like string to integer. We can directly use stoi, and this will be in integer form. This will be 16, and 16 we know that 16 is divisible by 8 because 16 can be written as 8 into 2. So 8 into 2 की form में तोड़ा जा सकता है 16 को. So here we will mark it as true because it is divisible by 8, because 16 divided by 8 कितना होता है 2, which is an integer, so completely divisible. So we will return true. What, as you can see, this number, this number we can't do this by using string to integer, because we can't convert it to integer form. Because if you know about this integer form, integer is the range of the integer is minus 2 to the power 31 to the power 31 minus 1. So this is the range of integer, but this number is out of the range, so we can't convert it to integer. And also we can't use the long int also, because then also it will be out of the range. So in this, what we will do is, let's see the approach. Yeah, 16 के case में, as you can see, 16 can be written as 8 into 2, and this is a true, okay, because it can be divisible. But if you take this number is out of the range. You know about the integer range, then this is the integer range, and this is the out of the integer range, and also a long integer range. So how we will approach this question? So it is a question like basic pattern. If you read the patterns, divisibility pattern, like one is all numbers can divisible by 1. 2, one digit. If 2 is the rule of divisibility of 2, one digit should be even. 2, 4, 6, 8. 3 के केस में क्या होता है कि sum of the digits should be divisible by 3. Like if we take example 243, we will check that if 243 is divisible by 3 or not. So in that case, what we will do? We will sum this 4 plus 3 plus 2, 9, which is divisible by 3. So 243 will also be divisible by 3. So 4, in case of 4, last two digits should be divisible by 4. Last two digit means if we take an example 1024, so 1024 nahi, because it will not be divisible by 4. If we take an example of 80, 80 नहीं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, अपने मन से ले लेना, ठीक है. अगर 288 लेंगे, नहीं वो भी सेट नहीं हुआ, ठीक है, वो अपने मन से एग्जांपल ले लेना, ठीक है. So if we take this if we take the example, so last two digits should be divisible by 4. Okay, if we want to check the divisibility of 5, so last digit should be 0 and 5. 6 के केस में क्या होता है, should be divisible by 2 and 3. 2 and 3 दोनों भी divisible होना चाहिए, तो वो 6 से भी divisible होगा. 7 के केस में आप बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, इसलिए आप बताएंगे इस केस में. 8 के केस में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8. सो कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक 512 ले लेते हैं, ठीक है. सो 512, लाइक इफ ये वाला एग्जांपल लेते हैं. लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं? 8 के केस में बता रहा हूँ मैं. 8 के केस में क्या है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8. सो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है. इफ माई साइज इज ग्रेटर देन 3, सो इस वाले के यूज करेंगे और लास्ट वाला 3 डिजिट देखेंगे. हेयर डिजिट इज 555, so which is not divisible by 8, so return -1. So let's do the code for this. So doing code is very easy, because see, हमें दो केस संभालने पड़ेंगे इसमें. बताता हूँ कैसे दो केस है, कोड करते हैं. या so firstly what I will do is I will check the size of the string. So if like int number equals to s dot size, ठीक है. Now I'll check if number if less than equals to 3. अगर मेरा string का size 3 से कम है, ठीक है, string का size 3 से कम है, लाइक 16 है, यहाँ पे 161 तक चलेगा, ठीक है. उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, उस नंबर को मैं इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो int a इक्वल्स टू stoi, इट इज द इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग टू इंटीजर. स्ट्रिंग क्या है, stoi ऑफ s,
ठीक है, इट मीन्स जो स्ट्रिंग है एस को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। नाउ आई विल चेक इफ ए modulo 8 equals to 0, it means it is completely divisible. In that case I will return 1, and in else case I will return 0, because if you know the mean of this a mod 8 a modulo 8, it means we are taking the remainder. If remainder equals to 0, it means it is completely divisible। ठीक है, ये हो गया n लेस देन इक्वल टू 3 के केस में। बट व्हाट अबाउट इफ, लिख देता हूँ, इफ my size s string size is greater than 3। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो नंबर, इस केस में क्या करेंगे अपन, 8 के डिविजिबिलिटी फॉर्म हमने देखा कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। सो इफ नंबर इज गेट इफ द साइज इज ग्रेटर देन 3, सो लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट कैसे देखते हैं, अपन एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग लास्ट 3 ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ कहाँ से कहाँ तक, नम माइनस 3 टू, और कितना फाइल 3। ठीक है, नम माइनस 3 मतलब इफ माई नंबर इज, मान लो कुछ था 11, ठीक है, स्ट्रिंग का फाइल 11 था, सो 11 माइनस 3 क्या शो कर रहा है, 8। सो इन स्टार्टिंग से 8 पोजीशन तक जाएंगे। ठीक है, 8 पोजीशन तक गए, लाइक अगर इसका मेरे को नहीं पता साइज कितना है इसका, मैंने मान लिया कुछ साइज है इसका 15। ठीक है, तो 15 माइनस 3 12 तक गए, तो 12 मान लो ये वाला एलिमेंट हुआ 12। ठीक है, 12 तक गए और 3 साइज आगे के 3 साइज को मैंने सब स्ट्रिंग में डाल दिया। आगे 3 साइज मतलब 555 को मैंने लास्ट 3 वाली स्ट्रिंग में डाल दिया। एंड नाउ आई विल चेक इफ, नाउ I will not check, I will apply a number if int a equals to stoi string to integer of last 3। ये वाली स्ट्रिंग को, जो मेरे पास 555 स्ट्रिंग आई है ना, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और सेम चीज कर दूंगा, सॉरी, और सेम चीज कर दूंगा इफ a modulo 8 equals to 0, return 1, otherwise else return 0। सेम केस किया। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ दिस विल वर्क और नॉट। Yeah, it is working perfect. Let's submit this. Yeah, it is giving me some wrong answer, but it is giving me wrong answer. Let's see. Oh, it should be -1 actually. Else return -1 होना चाहिए, क्योंकि 0 रिटर्न नहीं करना मेरे को, -1 रिटर्न करना है। As you can see here, we have to return -1 here। ठीक है, if it is not possible, then we have to return -1। Now it will work perfect। So directly submit भी कर सकते थे, submit कर दो। Yeah, it is working perfect। सो दिस वाज द कंप्लीट कोड। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया कि स्ट्रिंग का साइज निकाल दिया। अगर साइज मेरा स्ट्रिंग का लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मैंने सिंपल निकाला कि मॉड्यूलो निकाला, मॉड्यूलो चेक किया कि डिविजिबल है या नहीं है, ये मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाला केस क्यों किया, जब नंबर इज ग्रेटर देन 3 है, क्यों किया, क्योंकि अब इस नंबर को लेंगे ये आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा, इंटीजर की भी, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर की भी। सो इस नंबर को संभालना पड़ेगा, तो हमें 8 की डिविजिबिलिटी पैटर्न देखना पड़ेगा कि लास्ट के 3 डिजिट्स मेरे डिविजिबल होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, लास्ट के 3 डिजिट्स को मैंने इस लास्ट 3 वाली सब स्ट्रिंग में डाल दिया थ्रू एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ नम माइनस 3 टू 3 इज माई साइज। ठीक है, सो मैंने सेम चीज की, स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया और चेक किया कि डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट कोड। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।